हेलो गाइस, वेलकम टू ArtSlide। मेरा जो पुराना मैकेनिकल पेंसिल था कैमलिन का, वो बुढ़ा हो चुका है और ज़्यादा ही प्रॉब्लम देने लगा है। So I decided to get a new pencil. This is a Graph 1000 for Pro. पहले तो मैं Graphgear 1000 लेने के लिए सोच रहा था, पर जब मैंने ये पेंसिल देखा ऑनलाइन तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका डिज़ाइन, स्पेशली द स्टील ब्लैक कलर, और मैंने डिसाइड किया ये पेंसिल लेने के लिए। तो चलिए ये पेंसिल खोलते हैं। ये ऐसे सिंपल पैकिंग में आया हुआ है और इसके साथ मैंने पेंटेल का 4B लीड भी लिया हुआ है 0.5 mm का, जो मैं इसके साथ यूज़ करने वाला हूँ। So guys, let's review this pencil, the Graph 1000 for Pro. This pencil has cost me around 1000 rupees. इसका जो पुश मैकेनिज्म है वो ब्रास का बना हुआ है और काफ़ी टेक्टाइल है प्रेस करते वक्त। और यहाँ ऊपर पे आपका लीड थिकनेस इंडिकेटर है, ये स्टिकर नहीं है, दिस इज engraved on it. And here is a hardness indicator. You just need to twist it and it snaps into its place. ग्रिप काफ़ी सही है इसका, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ग्रिप। ये पार्ट आपका मेटल का है जो पेंट किया हुआ है और ऊपर से रबर का पैड लगा हुआ है। It weighs perfect in hand. Although it's made of plastic, it's solid build. So let's test this pencil. So I'll be doing a quick sketch with my new pencil. Enjoy the video. It's not a game, it's a rich thing. Overall, I think this is a great pencil. It's sturdy and solid.
I really like the design and the build quality. It's on a bit expensive side, but it's worth every penny. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching till the end.